Hello, my name is Harish, and today we will talk about MS Excel for beginners, the definition of Excel and what is the purpose of Excel. जब कभी भी आप एक्सेल के इंटरव्यू में किसी भी डेटा एनालिसिस एमआईएस के इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछता है कोई इंटरव्यूअर लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेल एंड पर्पज ऑफ एक्सेल. After watching this video, you will be able to explain in a very basic term like what is the Excel and definition of Excel and the key features of Excel in a like spreadsheets, cells, rows, columns, formulas, functions, charts. So today we will talk about only a definition of these 2 points. So let's get started. So overview of Microsoft Excel. So Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that helps you organize, analyze, and present data in a structured way. It uses a grid of cells to input information. You can perform calculations, create charts, manage data efficiently. So this is the kind of checklist we can create. इस तरीके का हम इसमें चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. Like these all are the charts we can create in Excel. We can create these kind of checklist for our day to day activities or tasks. So if we talk about definition and purpose of Excel, this is the Microsoft Excel is a software application designed for creating, editing, managing spreadsheets. A spreadsheet is a digital grid of cells where you can input numbers, text, formulas. Its primary purpose is to facilitate tasks like budgeting, data analysis, and organizing information in a tabular फॉर्मेट. सो ये एक एक्सेल का बहुत बड़ा पर्पस है जो कि किसी छोटी से छोटी फॉर्म में और किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूज होता है. तो हमें एक्सेल सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल है जो कि हमें आना चाहिए. इसके की फीचर्स क्या हैं, इसको कैसे यूज करते हैं इफेक्टिवली, एंड कैसे हम चेकलिस्ट बना सकते हैं, कैसे हम इसमें ट्रैकर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट we are going to do in a further videos. So hope you would like this small video, and thank you for watching.